Okay, so let us understand the structure of the atom first. हम लोग ये class 9 में क्या था, right? So every chapter that you do in class 9 has some significance in class 10. हम लोग structure of the atom primarily किस में पढ़ा, कौन सब्जेक्ट में पढ़ा है? केमिस्ट्री में पढ़ा है, बट यहाँ हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं. So ये structure of the atom फिजिक्स है या केमिस्ट्री है? So if it is dealing with electrons, it's chemistry. If it is dealing with nucleus, it's physics. ठीक है. सो अगर आपका वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन से हम लोग डीलिंग कर रहे हैं तो केमिस्ट्री हो गया. अगर हम लोग न्यूक्लियस से बात कर रहे हैं या इनर शेल इलेक्ट्रॉन से, जनरली न्यूक्लियस से जब बात करते हैं वी टॉक अबाउट फिजिक्स. ठीक है. सो स्ट्रक्चर ऑफ द एटम दोनों में कॉमन चैप्टर है, बिकॉज आपको वैलेंस शेल समझने के लिए स्ट्रक्चर समझना होगा, आपको न्यूक्लियस समझने के लिए स्ट्रक्चर समझना होगा, राइट? सो an atom for an element is generally alike. I'm using the word alike, generally alike, because we also have subtle differences in the mass number, right? Mass number थोड़ा different होता है, but वो एक difference है, right? So we have an atom contains a nucleus with protons and neutrons and orbits around the nucleus with electrons. ये हम लोग को पता है. सो हम लोग के पास एक न्यूक्लियस है, एंड इलेक्ट्रॉन जो होता है इस न्यूक्लियस में मूव करता है, राइट? दे रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन फिक्स्ड ऑर्बिट. द इलेक्ट्रॉन्स move around the nucleus in fixed orbits. ठीक है. The nucleus has a size in the order of 10 to the power of -14 और 10 to the power of -15 meters. एक मीटर को 10 टू द पावर ऑफ 15 से अगर आप डिवाइड करोगे, जो वैल्यू आएगा उतना छोटा लेंथ जो है वो आपका एक न्यूक्लियस का साइज होता है. द एटम measures in size from the center to the outermost orbit. तो हम लोग सेंटर से साइज लेंगे एंड आउटरमोस्ट ऑर्बिट तक उसको मेजर करेंगे, एंड इज यूजुअली इन द ऑर्डर 10 टू द पावर ऑफ -11 meters. ठीक है. सो जनरली ये काफी बड़ा होता है, काफी बड़ा होता है. ठीक है. आप इमेजिन करो, इतना बड़ा एक एटम है, न्यूक्लियस है, इतना बड़ा मेरा एटम है. अगर एक न्यूक्लियस 1 मीटर जितना बड़ा होता, then the atom as a whole will be 1000 meters to 10,000 meters in radius. जस्ट उसका रेडियस 10 किलोमीटर होगा, 1 मीटर जितना बड़ा
मेरा न्यूक्लियस होता। समझ में आ रहा है कितना बड़ा होता है एटम एज कंपेयर टू द न्यूक्लियस। ठीक है। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। Protons are positively charged particles that are present in the nucleus of the atom. ठीक है। Electrons are negatively charged particles present in fixed orbits around the nucleus. न्यूट्रॉन्स क्या है? न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रल पार्टिकल्स। नो आई नो आप लोग ये पहले से जानते हैं, बट एक बार इसको रिवाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, सो दैट वी अंडरस्टैंड द चैप्टर मच बेटर। सो why do we say neutral particles? Because it has no charge. A neutron is made up of a proton and an electron, दोनों combine करके आपको एक न्यूट्रॉन देता है। ठीक है। and a neutron is present in the nucleus of the atom. Does that make sense? Does that make sense? ठीक है। atomic number, the number of protons in the nucleus of an atom is known as the atomic number. ठीक है। इसको हम लोग से रिप्रेजेंट करते हैं Z सिंबल से। सो Z इज इक्वल टू नंबर ऑफ protons in the nucleus. So now the point is, why not mention electrons here? हम लोग protons क्यों बोलते हैं? Because electrons चेंज होता है, सो वी कैन गेन इलेक्ट्रॉन्स एंड वी कैन लूज इलेक्ट्रॉन्स। यस। सो इलेक्ट्रॉन का नंबर जो होता है वो ऑर्बिट में चेंज होता है, नॉट चेंज होने की वजह से आई कैन नॉट चेंज द एटॉमिक नंबर, राइट। हम एटॉमिक नंबर इलेक्ट्रॉन का चेंज होने से तो चेंज नहीं कर सकते, ये फिक्स्ड वैल्यू है। ठीक है। दिस इज यूनिक फॉर ईच एलिमेंट। हर एलिमेंट का एटॉमिक नंबर यूनिक होता है। नो टू एलिमेंट्स हैज द सेम एटॉमिक नंबर। हर कोई भी दो एलिमेंट का सेम एटॉमिक नंबर नहीं होगा, ये यूनिक होता है। एंड प्रोटॉन ही एक ऐसा चीज है जो केमिकल रिएक्शन में कुछ टेक पार्ट नहीं करता, राइट। सो इलेक्ट्रॉन टेक पार्ट करता है, वो गेन एंड लूज होता है। सो वी कैन नॉट से डायरेक्टली कि भाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, हम लोग क्या बोलेंगे प्रोटॉन होगा, क्योंकि प्रोटॉन आगे पीछे नहीं कम होगा, राइट। सो द नेक्स्ट वन इज एटॉमिक मास। ना एटॉमिक मास जो है इट इज इक्वल टू sum of protons and neutrons, as electrons have negligible mass. So the sum of
नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो जितना प्रोटॉन है जितना न्यूट्रॉन ऐड करेंगे हमको क्या मिलेगा, एटॉमिक मास मिलेगा। इसका सिंबल है ए। ठीक है, इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। सो अगर आपके पास एक एटम है जिसका रेडियस 1 किलोमीटर है, एक एटम ऐसा है जिसका रेडियस 1 किलोमीटर है, उसका पूरा मास 1 मीटर के अंदर में हो जाएगा। 99.9999% मास उसका 1 मीटर के अंदर आ जाता है, बिकॉज उसका पूरा मास न्यूक्लियस में होता है, न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स के बीच में होता है। समझ में आ रहा बात, क्लियर है ये? प्लीज कॉपी एंड देन वी मूव अहेड। ओके, few more terms and terminologies. Isotopes, ठीक है, these are atoms of the same element. So when we say same element, अगर हम same element बोल रहे हैं मतलब number of protons is same. हर एलिमेंट का एटॉमिक नंबर सेम होता है, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होता है। लाइक अगर अगर उसका नंबर प्रोटॉन दूसरा है, मतलब वो सेम एलिमेंट ही नहीं है, वो अलग कोई एलिमेंट होगा। करेक्ट? सो दीज आर एटम्स सेम एलिमेंट, दे हैव द सेम एटॉमिक नंबर बट हैविंग डिफरेंट मास नंबर। ठीक है, दे हैव डिफरेंट mass numbers, meaning the atom has a different number of neutrons. ठीक है, ठीक है। So now the question becomes, give us some examples. Hydrogen. Now normal hydrogen का atomic number 1 है। We also have deuterium and we also have tritium. ठीक है, ये तीन आइसोटोप से हाइड्रोजन का, ड्यूट्रियम एंड ट्रिटियम। ठीक है, normal hydrogen has 1 proton 1 electron 0 neutron. ड्यूटेरियम, सॉरी ड्यूटेरियम नहीं बोलते इसको, ड्यूटेरियम हैज 1 proton 1 electron 1 neutron and tritium has 1 proton 1 electron and 2 neutrons. समझ में आ रहा बात? तीन अलग अलग एटम होगा, एक का न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन होगा एंड एक ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन होगा, दूसरे वाले न्यूक्लियस में दो, एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन हुआ एंड एक ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन होगा, तीसरे में एक दो एंड तीन पार्टिकल होगा, एक प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन। ओके, लेट्स डू डिफरेंट कलर्स फॉर इट। एंड ऑर्बिट में अगेन वही एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। सो वी हैव थ्री पार्टिकल्स देयर बट हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर। ऑल्सो let us take the example of chlorine. Chlorine has two isotopes. एक क्लोरीन है जिसका एटॉमिक मास है 35 एंड एक क्लोरीन है जिसका एटॉमिक मास है 37 एंड दोनों के बीच में रेशियो है 3:1 का। यानी हर चार एटम में एक एटम आपको ये वाला मिलेगा एंड तीन एटम आपको ये वाला मिलेगा। डज दैट मेक सेंस? सो इसमें क्या है, क्लोरीन में 17 होता है, इसमें मिलेगा 17 प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉन्स एंड 18 न्यूट्रॉन्स। इसमें मिलेगा 17 प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉन्स एंड 20 न्यूट्रॉन्स। डज दैट मेक सेंस? दीज आर नोन एज आइसोटोप्स। लेट अस टेक अनदर एग्जांपल, कार्बन। कार्बन का दो मेजर आइसोटोप्स है, 12 एंड 14, दोनों में 6 होगा एटॉमिक नंबर। ठीक है, यहां नहीं लिखा रहता है, 12 एंड 6 6 एंड 14, यानी यहां अगर आप चेक करने जाएंगे तो you'll have 6 protons 6 electrons and 6 neutrons। इसमें होगा 6 protons 6 electrons but
8 न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स यहाँ अलग रहता है। ठीक है, क्लियर ना। आइसोटोप्स बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए। हम लोग जब आगे करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हम लोग आइसोटोप्स क्यों कर रहे हैं। देयर आर अदर टर्मिनोलॉजीज आल्सो इन दिस। नंबर 1 आइसोटोन्स, नहीं कुछ तो इक्वल होने वाला है एंड कुछ डिफरेंट होगा। आइसोबार्स पहले करते हैं, दैट्स फार मोर कॉमन। दे आर different elements that have the same mass number. There are different elements that have the same mass number. ठीक है, यानी different elements का मतलब क्या हुआ? Atomic number is not same. ठीक है, atomic number अलग है but mass number same है. So if we take an example, we'll have calcium and argon. Calcium has 20 atomic number, 40 atomic mass. Argon has 18 atomic number, 40 atomic mass. यानी अगर हम लोग इसको चेक करेंगे, it will give me 20 protons, 20 electrons and 20 neutrons. Does that make sense? But यहाँ अगर आप देखोगे आपको क्या मिलेगा? 18 protons, 18 electrons, but 22 neutrons. Does that make sense? Does that make sense? Lastly, we have isotones. ठीक है, different atomic number, different mass number, but same number of neutrons. यानी एटॉमिक नंबर भी अलग है, एलिमेंट अलग है, मास नंबर भी अलग है, बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन माइनस करके आपको सेम मिल रहा है. फॉर एग्जाम्पल वी हैव सोडियम एंड मैग्नीशियम. सोडियम इज 1123 और ये 1224 है शायद. यस, यस, ठीक है. सो अगर आप इसको चेक करेंगे, यू विल गेट 11 protons, 11 neutrons, 12, सॉरी 11 electrons, 12 neutrons. इसमें होगा 12 protons, 12 electrons and 12 neutrons. ठीक है, सो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स यहाँ सेम होगा. आर वी क्लियर? प्लीज कॉपी.